that, there is some big breaking news that we are quickly shifting focus to this regarding the Agnipath expose, where the army says that enough recruitment rallies were not being conducted in Punjab. Now, Bhagwant Mann, the Chief Minister himself, has tweeted about it. He says, I'm going to quote him here, all deputy commissioners were directed to provide complete support to the army authorities for recruitment of Agniveers in Punjab. Any laxity shall be reviewed seriously. Every effort will be made to recruit the maximum number of candidates into the army from the state of Punjab. Remember this after Arvind Kejriwal himself had come out and said, I am going to look into what the reason is and we support the Agniveer scheme no matter what was said about it in the past. Let me go across to Gurpreet Singh Cheena, who's joining us from Chandigarh. Gurpreet, the first time we've heard the Chief Minister himself come out to say, and he says that we are putting in maximum effort, but the army still says that it's not showing on the ground. It seems that the state government and specifically the Chief Minister of Punjab, they have taken a U-turn. Since morning, Times now is trying to track all the officers, and we are the first one who have tracked the Chief Secretary, who had already said that directions had already been given to the Deputy Commissioner so that there should not be any problem for the army. But the letter which we have accessed, that showing that how army is not able to get the local logistics, and that had turned out to be one of the specific reasons for the army why they had written to the Chief Secretary. At the same time, we have seen the Chief Minister of Punjab, Bhagwant Singh Mann, he has also reiterated saying that the direction had already been given to all the Deputy Commissioner to provide this logistics at the district level so that in Agnipath scheme there should not be any problem. But if we can talk about army side, we can see that army, they were not able to get the logistics, and finally they had raised this issue before the Chief Secretary. So somewhere down the lane, it seems that Army Party in damage control mode, and they have taken a U-turn so that such type of message should not go into masses. Huge people from Punjab, they are aspirants for the army, and we have seen a number of people, they had already joined the army, and there is a lot of craze among the youngsters also in Punjab. So at this point of time, we have seen the Chief Minister had also reiterated the same thing which Times Now had already broken when they had confronted the Chief Secretary, who had assured that directions had already been given to the Deputy Commissioner. And well, in fact, that's very interesting because there's a massive divide within the Aam Aadmi Party over Agnipath, it seems. On one hand, you have the Chief Minister saying we are going to cooperate. On the other hand, and this is the next big breaking news that we are getting for you, the Punjab Finance Minister is coming out and said that we've opposed Agniveer scheme earlier and we continue to oppose it even today. So Punjab's Finance Minister directly is saying what is contradictory to what the Chief Minister and even Arvind Kejriwal is saying. Listen in to the Finance Minister. कोई मामला मेरे ध्यान में नहीं हैगा, पर लेकिन मैं समझदा पंजाब दे उत्ते किसे कोई भी पाबंदी नहीं ला सकतागा। पंजाब के लोग पहला भी देश की सरहद के उत्ते जाके फौज में भर्ती होंदे सी, पर लेकिन असि अग्निवीर ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮ ਆ, अग्निवीर ਸਕੀਮ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। Well, in fact, let me go across to Malvinder Singh Sirsa, who's joining us as well. Mr. Sirsa, what do you make of it? On one hand, you have the Chief Minister saying we are going to cooperate, but the Finance Minister said that Agniveer को हमने तब भी oppose किया था, आज भी oppose करते हैं. क्या हो रहा है? Mr. Malvinder Singh Sirsa, can you hear me? Yes, I can hear you now, please. Sir, I was asking you about the contradictions coming in from Aam Aadmi Party over the Agniveer. Chief Minister being contradicted by his own Finance Minister. देखिए, अग्निवीर में मैं जो समझता हूं कि दिल्ली से जो लोग बैठे बोल रहे हैं, वो अरविंद केजरीवाल, वो कभी नहीं चाहेंगे कि वो जो बातों में मर्जी बोले, लेकिन वो दिल से नहीं चाहते कि पंजाब के अंदर अग्निवीर की भर्ती हो, पंजाब के लोगों को रोजगार मिले। लेकिन दूसरी तरफ भगवंत मान पंजाब से हैं जी, उनको इस बात का एहसास है। मैं अभी देख रहा था, अभी एक मिनट पहले भगवंत मान ने अभी ट्वीट करके जी अपने डिप्टी कमिश्नर्स को हिदायत दी है कि अग्निवीर की जो प्रक्रिया में उनका सहयोग करें। सो मुझे लगता है जो पंजाब की सोच रखते हैं वो नहीं ऐसा करेंगे, लेकिन अरविंद केजरीवाल ऐसा नहीं चाहेंगे। ये मेरी अपनी भावना है कि वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि पंजाब में अग्निवीर की भर्ती हो, पंजाब के लोगों को रोजगार मिले। वो पंजाब के अंदर अनरेस्ट फैलाना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल,
इसलिए वो चाहते हैं कि पंजाब के लोगों को ज्यादा से ज्यादा बेरोजगार रखा जाए। मगर अब तो मनप्रीत सिंह बादल भी बोल रहे हैं कि हमने तभी भी अपोज किया था अग्निवीर के स्कीम को, आज भी हम अपोज कर रहे हैं। तो पंजाब के ओन मंत्री, कैबिनेट, चीफ मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, ऐसा लग रहा है सभी अलग अलग चीजें बोल रहे हैं। क्या वो बस कैमरा के लिए बोल रहे हैं, अपना बयान दे रहे हैं? नहीं, देखिए इसमें ऐसा है, जो तो अरविंद केजरीवाल का साथ देते हैं, जैसे फाइनेंस मिनिस्टर वहां के हैं चीमा, वो अरविंद केजरीवाल के नजदीकी माने जाते हैं, वो अरविंद केजरीवाल की बात को पंजाब में रखते हैं। तो वो वही बात रखेंगे जो अरविंद केजरीवाल चाहेंगे। तो अरविंद केजरीवाल नहीं चाहते पंजाब में अग्निवीर की भर्ती हो, तो इसलिए अरविंद केजरीवाल की जो बात बोलेंगे, अरविंद केजरीवाल का माउथपीस जो है वहां पे चीमा है, और चीमा और सीएम जो है अलग थलग पड़े हुए हैं इस वक्त, क्योंकि अरविंद केजरीवाल कहीं भवन करने का बना चुके हैं। इसलिए पंजाब बड़ी स्थिति में है। तो अग्निवीर की दिक्कत तो दूर किए, पहले तो भगवंत मान अपनी कुर्सी को देख रहे हैं कि वो कैसे बचाए। जी, मगर सिरसा जी, इसका इम्पैक्ट जो नौजवान है पंजाब पे, उन पे क्या पड़ेगा? ऐसे पॉलिटिक्स जो खेली जा रही है अग्निवीर पे, क्योंकि सबको ही पता है सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन अगर इंडियन आर्मी में है वो स्टेट पंजाब है। Well, it seems that we have lost that audio connection, but you have the first reaction there coming in from the BJP saying that the Aam Aadmi Party is saying one thing, but they mean something else, and they have always, the central leadership has always opposed the Agniveer, and that is very evident in the different reactions which are coming in from the Aam Aadmi Party. Of course, on paper you have the Chief Minister as well as the Aam Aadmi Party conveyor, Arvind Kejriwal, saying that we are ready to facilitate the army recruitment, but the army has said on ground that's not happening. But on the other hand, now you have their own finance minister coming out and saying that we have opposed Agniveer and we will continue to do so. So, Gurpreet, I'm going to come back to you. Clearly, the BJP is saying that Aam Aadmi Party, at least the central leadership, does not want to back the scheme, and they are doing everything to scuttle it. Well, yes, of course. If we can go through the bite of sound bite of Finance Minister Harpal Chima, he had just spoken to the media saying that since first day they were opposing this scheme. But at the same time, if I see the Chief Minister of Punjab, Bhagwant Singh Mann, who had just tweeted and saying that the direction had already been given to all the commissioners of Punjab that they should provide all the logistics at the district level, so that there should not be any problem for this rally which has been scheduled by the army. But it seems that all the leaders, they are towing the different lines, so that is the main question at this point of time. And if we can specifically talk about the role of Punjab people in the army, we have seen there is a lot of aspirants, and the way this letter has been written to the Chief Secretary, in that letter it is clearly mentioned by the army officers, saying that it seems that the way the logistics are not being provided at the district level, the rally should be changed from the place, from Jalandhar to somewhere else, or it should be changed from this state to another state, maybe Haryana, Rajasthan and other states. So it seems that army was not comfortable, and a law and order situation, they don't want that should be disturbed at all. So they have already taken precaution, they have already informed the Chief Secretary, and since the Times now has been trying to confront all the Aam Aadmi Party leaders as well as Chief Secretary of Punjab, it seems that a U-turn has been taken by Aam Aadmi Party. So let's see that how this controversy is going to be pacified by Aam Aadmi Party leaders. In fact, let's get you what exactly the finance minister has said. Right after the chief minister says we are going to back the scheme, you have his own mantri on record saying we opposed it then, we'll oppose it again. Listen in. कोई मामला मेरे ध्यान में नहीं हैगा, पर लेकिन मैं समझदा पंजाब दे उत्ते किसे कोई भी पाबंदी नहीं ला सकतागा। पंजाब के लोग पहला भी देश की सरहद के उत्ते जाके फौज में भर्ती होंगे सी, पर लेकिन असं अग्निवीर ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮ ਆ, अग्निवीर ਸਕੀਮ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। Let me go across to Aam Aadmi Party's Mr. Malvinder Kang, who's joining us. Sir, your first reaction, if you can explain to us, Chief Minister कुछ और बोल रहे हैं, मंत्री जी और कुछ बोल रहे हैं, आम आदमी पार्टी सपोर्ट कर रही है या नहीं कर रही ये रिक्रूटमेंट अंडर अग्निवीर स्कीम? देखिए, रिक्रूटमेंट तो आर्मी ने अपने तरीके से करनी होती है। जो असिस्टेंस की यहाँ तक बात है, बिना सपोर्ट तो नहीं कर पाएंगी। देखिए मेरी बात सुन लीजिए ना, काइंडली मैं रिप्लाई कर दूं। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जी ने अभी ट्वीट किया है कि जहां तहां असिस्टेंट की जरूरत है, डिप्टी कमिश्नर्स को डायरेक्शंस जारी हो गई।
तो उसमें अदरवाइज तो स्टेट गवर्नमेंट का कोई लेना देना होता नहीं है, ऑटोनॉमस है, आर्मी अपने आप ही रिक्रूट करती है। जहां जहां असिस्ट करने की जरूरत होगी पंजाब सरकार डेफिनेटली करेगी। मगर कांग जी, ये हो रहा है क्या? क्योंकि आपके अपने ही फाइनेंस मिनिस्टर मनप्रीत सिंह बादल आके, अभी हमने उनका साउंड बाइट चलाया, वो खुद ही बोल रहे हैं कि हमने तब भी अपोज किया, आज भी हम अपोज कर रहे हैं। मनप्रीत बादल तो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है ही नहीं है, ये तो कांग्रेस के फाइनेंस मिनिस्टर चीमा जी। नहीं, मैंने नहीं देखा, लेकिन जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जी ने अभी ट्वीट किया है वो ही। हम किनकी माने, चीफ मिनिस्टर जी की माने या हम आपके मंत्री की माने? जो मंत्री बोल रहे हैं कि हमने तब भी अपोज किया, आज भी अपोज किया है। कांग जी, आप 1 मिनट अगर बने रहे, हम आपको ये छोटा सा 18 सेकंड का एक बाइट है, ये आपको चला के हम सुना देते हैं। लेट्स प्ले आउट द बाइट विच इज कमिंग इन। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਅਗਨੀਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮ ਆ, ਅਗਨੀਵੀਰ ਸਕੀਮ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ऐसा होना नहीं चाहिए। मतलब हमारे जो भी मतभेद रहे अग्निपथ को लेके, बट Well, can I go across to Mr. Kang? Mr. Kang, आपने अगर सुना, अभी आप ही के मंत्री बोल रहे हैं कि हमने तब भी अपोज किया, आज भी अपोज ही कर रहे हैं, आपने बस खुद सुना अभी? जहां तक मुझे सुना है, मंत्री जी ने कहा है हम पंजाब पहले भी देश की सिक्योरिटी को लेकर बड़े लेवल पे कंट्रीब्यूट करता रहा है। पंजाब के हजारों नौजवान शहादत देते रहे हैं और आर्मी के थ्रू और बाकी जो हमारे डिफेंस फोर्सेस हैं, पंजाब की रिप्रेजेंटेशन बहुत रही है और आगे भी रहेगी। और अभी ऑनरेबल जो चीफ मिनिस्टर हैं भगवंत मान जी, उन्होंने भी ट्वीट किया है, जो अभी कोई असिस्टेंस को लेकर जो प्रॉब्लम रही है, जो एक अखबार ने आज खबर लगाई है, तो डेफिनेटली वो डायरेक्शन जारी होगी है सभी डिप्टी कमिश्नर्स। अगर इतना सपोर्ट आपका रहा है, आपके प्रशासन का रहा है, तो आर्मी ये क्यों बोल रही है कि आपको हेल्प नहीं मिल रही? ऐसी हेल्प नहीं मिल रही कि वो सोच रहे अभी रिक्रूटमेंट सेंटर पंजाब से लेके किसी और स्टेट में कर दे, शायद हरियाणा में करे। आप अगर इतना असिस्टेंस दे रहे हैं। मैं बड़ा स्पष्ट आपको बोल चुका हूं कि आर्मी की रिक्रूटमेंट प्रेरोगेटिव आर्मी का है। स्टेट्स को जहां जहां असिस्ट करने की बात है, पंजाब सरकार उनको असिस्ट करने को तैयार है और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने सभी डिप्टी कमिश्नर्स को डायरेक्शन जारी कर दी। बीजेपी बोल रहे हैं कि ये सैबोटाज हो रहा है अग्निवीर स्कीम का आम आदमी पार्टी सरकार से। बीजेपी क्या बोल रही है सारा देश जानता है, बीजेपी क्या कर रही है। तो बीजेपी की सच्चाई सब लोग जानते हैं, लेकिन जो देश की सेना है, देश की सिक्योरिटी की बात है, पंजाब ने हमेशा बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया है। सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन पंजाबियों ने किया है देश की सिक्योरिटी को लेकर। Which is why it's very surprising when the army says that they have reached such an extent that they are thinking they may have to move the recruitment centers out of Punjab because the biggest contribution comes from Punjab. Thank you so much, Malvinder Singh Kang, for speaking to us. This is Aam Aadmi Party spokesperson. He says that on ground we have given whatever support. It is the prerogative of the army to hold this recruitment. We can only give support to them when it comes to carrying out and the administrative parts of it. However, what they cannot deny, and they have not given a direct answer to as to why their chief minister and their own mantri is speaking in two different voices. Let me go across to